So first, now we are going to learn about that's a mutation. Mutation, mutated meaning what changes, right? Changes. When does phenotypes get changed? You know now, phenotype, genotype, phenotypic ratio, genotypic ratio. 4 words we have learned. So tell me, when does phenotype change? When genotype change, yes or no? Capital T as a genotype. So phenotype क्या होगा? Tall. But small t as a genotype then? Ra. So when genotype change, it ultimately change the which one? Phenotype. Right? So here the mutation we are going to learn. That mutation, 3 steps you should remember. First, in that alteration in DNA sequences. DNA is made up of what? Nucleotides. Which are the nucleotides? Thymine. ATGC. Right? Adenine, thymine, guanine, cytosine. And in that, a random, that's a sequence, is there which form the gene. AATTCC, like that, anything. So if any change occur in this nucleotide sequence, any change occur in a which part? Nucleotide sequence, right? Suppose one nucleotide sequence like this. This is the one of the nucleotide sequence in our DNA, hypothetically. And in that, this one gets changed. This thymine, somehow due to any, that's a chemical agent or any viral infection, anything, right? That this one convert into like this structure. So nucleotide change, T to A ho gaya, yes or no? It's a nucleotide. But thymine and adenine molecular is same hai ya different? Different. So nucleotide change, that change the first genotype and then change the phenotype. So 3 steps. First कहाँ पे change मिलेगा आपको? Alteration in DNA sequence. Alteration in that's a nucleotide in DNA. Second, once alteration done, that leads to changing genotype, and genotype when changed, then it leads to changing phenotype. This is the basic definition for mutation. Clear? So as and when I say mutation. So first we have learned for DNA level. DNA in that alteration in which part? Nucleotide sequences. That changed to which one? Genotype. And then it changed to phenotype. यहाँ तक clear? Now, next, first over here given, that is chromosomal mutations. Which one? Chromosomal mutations, this occurs due to changes in the structure of chromosome. Right? Now, here normal the structure, we make the chromosome like this. Okay? Consider that over here the gene A is present. Next, B is there, C, D and the E. Chromosomes are made up of DNA or DNA is made up of chromosomes. याद है ना वो काइट फेस्टिवल वाला, right? So in that chromosomes are made up of DNA. So ultimately chromosome में क्या है? DNA. DNA के पास क्या है? Gene, right? So here gene को हमने just letter के form में represent किया है A, B, C, D, E. This is the normal chromosome. Which chromosome? Normal chromosome. Now, during ये chromosomes का क्या होता है? Replication. Yes or no? Sister chromatid formation during which stage? S phase. Cell cycle G1 as G2. So S phase में क्या होता है? Duplication. Same exact image form होता है? Yes or no? During that time, if any kind of changes occur, then first change, the first kind of mutation at chromosomal level. Which level? फर्स्ट हम जो लर्न कर रहे हैं दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस. सो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे हम वर्क कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट द टाइप ऑफ म्यूटेशन गिवन दैट इज डिलीशन. व्हिच वन? डिलीशन. ओवर हियर डिलीशन इन दैट, सी ये नॉर्मल है, normal, and after deletion looks like this. So which part gets deleted? C. C part replicate ही नहीं हुआ,
right? C part somehow due to any internal, external factors, anything, right? That C part cannot be able to what? Replicate. तो ये genes तो क्या हो गए? Lost, right? Each and every gene is important और चलता है. Each and every gene is important because gene meaning genotype और वो genotype से हमें क्या मिलता है? Phenotype. जो genes lost हो गए means genotype lost, तो उसका क्या lost? Phenotype. वो character क्या हो गया? Lost. Clear? So one, that is the deletion type. Which one? Deletion due to any, that's the conditions that any C, यहाँ पे हमने in between लिया है, that's the which one? C is lost, right? It can be E, it can be D, anything, right? Second type of mutation is a which one? Duplication. Which one? Duplication. Duplication normal से compare कीजिए A, B, C, D, E, but extra क्या आ गया? C. That C part of that genes replicate 2 times. Okay, so replicate 2 times doesn't mean कि जितने ज्यादा जीन उतना सुपर पावर, right? That is wrong concept. In Drosophila this thing has been diagnosed. Duplication की वजह से जो genes होते हैं for the eye color gets duplicated and due to that eye vision in that the problem. Clear? So duplication doesn't consider that it's a good thing. It's a mutation. Next one. After that here given third one, that is insertion. Which one? Insertion. Insertion in that. Insertion से भी better यहाँ पे एक word याद रखना. Insertion तो है ही, but inversion. Which one? Inversion. Inversion meaning over here actually. Insertion हम next में learn करेंगे. Inversion meaning loop formation. Inversion meaning which one? Loop formation. Which one? Loop formation first. This is the normal sequence A, B, C, D, E, F. And यहाँ पे मान लो कि centromere है, right? Now loop form करना है. आपके पास एक thread है, imagine like that. और उसके ऊपर आप just 6 color के different shades A, B, C, D, E, F ऐसे कर दो. Now next that A, B, C, D, उसके बाद ये टर्न हो रहा है, लूप फॉर्म हो रहा है. सो यहाँ पे तो अब तक सिमिलर A, B, C, नेक्स्ट क्या है D, फिर क्या आएगा E and F over here. लूप किया तो that positions get changed. Once the loop gets formed, this parts get detached from it. जहाँ पे loop form हो रहा है ना, that node part detached हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? Detached. So now after the detach, immediately they join also. First what? Detach and then join. In that A, B, C, D. But अभी कौन सा part joint हो जाएगा? F and then E. Sequence get changed or remain same? ये जो लूप फॉर्म हो रहा है, राइट? पहले ऐसे स्ट्रेट था, बट लूप फॉर्म हो रहा है, द पोजीशंस गेट चेंज, राइट? सो A, B, C, D, E, F normal sequence, but now here the sequence after loop formation A, B, C, D, F, E. That is also one kind of what? Mutation. So chromosomal mutation in that first deletion हो सकता है any part of the chromosome. Second can be duplicate. Third, the sequence get changed. Sequence get changed. Chromosome का length तो same ही रहेगा, but the gene sequence get changed, right? And that's we call inversion. That we call which one? Inversion. And the fourth type of the chromosomal mutation that we call translocation. Which one? Translocation. Which one? Translocation. Translocation in that. During that replication time, right, sometimes may happen this thing that suppose this is the chromosome number 22. Which one? 22. And next that is the chromosome number over here 9. Okay. So during replication it might happen that some portion of this 22 number chromosomes do not get replicated and get detached. वो क्या हो जाएगा? Detached. वो सब कैसे होगा कि that we will learn in the next chapter.
बट हियर जस्ट म्यूटेशंस के टाइप्स जो है वो आपको लर्न करना है, राइट? सो फर्स्ट, that small portion of this 22 number chromosome here that get detached and then joined to which number chromosome? 9 number. Which one? It's a random process. First of all, it's a random. यहाँ पे मैंने ये दो नंबर्स लिए है, राइट? ऑलरेडी 22 एंड 9 नंबर से दिस इज ह्यूमन में होता ही है कि 22 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे चला जाता है? 9 नंबर पे, राइट? This thing you can commonly observe in case of cancer cells, right? In case of which one? Cancer cells. This thing commonly observed. All kind of generally mutations commonly observed in the which cells? Cancer cells, right? So first type of mutation is which one? Deletion. Second, duplication. Deletion sequence याद रखना, नॉर्मल ABCDF, उसमें से कोई भी एक लेटर क्या करना है? मिस आउट, तो वो पार्ट क्या होगा? डिलीटेड. क्रोमोसोम का वो पार्ट डिलीट हुआ, मीनिंग दैट जीन्स गेट लॉस्ट, फिनोटाइप्स गेट लॉस्ट. सेकेंड पार्ट दैट इज द duplication. In that repetition that never gives the superpower that actually affects the phenotype. Third is a which one? Inversion. Inversion का meaning क्या याद रखना है? Loop formation, right? And fourth one is a translocation. Which word is given? Translocation. See here, translocation. These two are sister chromatids. Yes or no? These two are sister chromatids, right? These two are also sister chromatids, right? But when I compare between these two, then what? Right? So chromosomal part exchange हो रहा है, means transfer हो रहा है, exchange भी नहीं, chromosomal parts transfer between homologous or non-homologous chromosome? Non-homologous chromosome. That process we call which one? Translocation. That we call which one? Translocation. Clear? So chromosomal mutations में 4: deletion, duplication, inversion and translocation. Commonly all this we can observe in case of what kind of cells? Cancerous cells, right? बोलो. Yes. Translocation, in that two different, that's a pair, different pairs are there. In that it might happen during replication time that some portion, suppose this portion gets detached, right? During replication this portion get detached from this pair. So ये क्रोमोसोम अभी कैसा बन गया? सिर्फ इतना ही. And the detached portion get attached to any, that's a pair of chromosome, right? So this one we call the which one? Translocation. Here this exchange occur between the non-homologous chromosomes, right? Bolo. Inversion में loop formation. Yes. DNA the chromosome. No. This thing happens when that any mutation means changes, any exposure is there. UV radiation से होता है skin cancer, yes or no? So UV radiation से any gases that also cause the which one? That mutation. So during that time either of anyone this thing can be possible. Yes. बोलिए. Clear? Sure? Anyone have a doubt? कौन से 4 types learn किए? Yes. In which one? That's a sequence like A, B, C, D, D, E, F. In which one? A, B, C, D, F. In which one? The sequence like A, B, C, D, F, E. Right. And the between two non-homologous chromosomes, translocation, right? So this thing leads what? Changes in chromosomes lead to chromosomal abnormalities or aberrations. Abnormalities, or we call what? Chromosomal aberrations. These things commonly seen in which cells? Cancer cells. Next one. After that, the second type of mutation is a which one? Gene in that point mutation. Which mutation? Point mutation. How much the length of our DNA? 2 meter? Yes or no? Right, so 2 meter length of DNA. In that millions of nucleotides are present. Right?
मिलियंस में से सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है, चेंज. ओनली वन न्यूक्लियोटाइड्स गेट चेंज एंड दैट आल्सो कॉज व्हाट, डिसीज. दैट आल्सो कॉज व्हाट, डिसीज. एंड एक ही पॉइंट पे चेंज हो रहा है, राइट. इसमें डिफरेंट टाइप्स है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉइंट म्यूटेशन. सो ये जो हमारा 2 मीटर का डीएनए है, in that in a particular part, when single nucleotides get changed, only single nucleotide, that leads to disease. Example given here, single, which one first of all change, base pair. क्यों base pair लिखा, because DNA is double stranded. अगर यहाँ पे थाइमिन की जगह पे एडेनिन बन गया, थाइमिन की जगह पे क्या बना, नॉर्मल में क्या होता, सपोज यहाँ पे एडेनिन, तो यहाँ पे क्या होता, थाइमिन. You know ना, adenine makes a pair with, guanine makes a pair with cytosine. So अगर नॉर्मल में एडेनिन यहाँ पे, तो here थाइमिन. But now consider like that कि suppose here थाइमिन रिवर्स, थाइमिन की एडेनिन की जगह पे यहाँ पे क्या बन रहा है, तो ऑपोजिट क्या हो गया, एक्चुअल पोजीशंस तो चेंज हो रहे हैं ना. जो स्ट्रैंड पे एडेनिन था वहां पे अभी क्या आ रहा है, थाइमिन, राइट. और जहां पे थाइमिन था वहां पे क्या हो रहा है, एडेनिन. पेयर, सिंगल बेस पेयर गेट्स चेंज, सिंगल बेस पेयर गेट्स चेंज. फॉर दैट द बेस्ट एग्जांपल, सिकल सेल अनीमिया. व्हिच वन, सिकल सेल अनीमिया. हैव यू एवर हर्ड अबाउट अनीमिया? क्या, हाँ, low hemoglobin, then red blood cells, okay, decrease in number. Next, that person, if low hemoglobin, low oxygen, persons get what, fatigue, है ना, persons get fatigue. So now gene or point mutation, in that a mutation caused by a change in a सिंगल न्यूक्लियोटाइड नहीं, विच वर्ड इज गिवन, सिंगल बेस पेयर. दोनों स्ट्रैंड पे चेंज हो रहा है, राइट. सपोज यहाँ पे ग्वानिन आ रहा है तो सामने क्या आ जाएगा, साइटोसिन. ओके. इन दैट नॉर्मल डीएनए हैज विच सीक्वेंस, नॉर्मल डीएनए हैज विच सीक्वेंस, GAG. G stands for A and then, but जो डिफेक्टेड डीएनए बन रहा है, इन दैट एडेनिन की जगह पे क्या आ रहा है, थाइमिन. यस और नो, GAG की जगह पे क्या बन गया, सो रिस्पेक्टिव अदर स्ट्रैंड में क्या होगा, G है तो A है तो G है तो इसके अदर स्ट्रैंड में, तो CAC CTC बोथ आर सीन, नो. पूरा पेयर चेंज हो रहा है. यहाँ पे AT हम बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, TA, राइट. सो सिंगल बेस पेयर चेंज दैट लीड्स टू द विच डिसीज, सिकल सेल अनीमिया. डिटेल जब हम सिकल सेल अनीमिया भी लर्न करेंगे, इन दैट वी विल लर्न, राइट. सो पॉइंट म्यूटेशन, डेफिनेशन समझ में आना चाहिए. पॉइंट म्यूटेशन 2.2 मीटर के डीएनए में सिंगल क्या चेंज हो रहा है, one single base pair that gets changed, that GAG converts to which one, GTG, right. GAG converts to mutated DNA, that is GTG, and that leads to what, that cause which disease, sickle cell anemia. Anemia के different types होते हैं, right. So one kind of anemia that occurs due to the deficiency of vitamin B12, वो टेम्पररी होता है, जेनेटिकली नहीं होता है. जैसे ही आप B12 के इंजेक्शंस ले लो, राइट, मेडिसिन उसके स्टार्ट कर दो, देन अगेन द हीमोग्लोबिन लेवल, आरबीसी लेवल, दैट विल बी द इंक्रीज. बट दिस वन इज जेनेटिक लेवल, राइट. जीन सी वैसे नहीं है कि जो आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन या आरबीसी बना के दे. क्लियर. सो इट्स अ परमानेंट, इट्स अ परमानेंट. नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. विच वन, frame shift mutation. In that, very easy, understand like this, that cat has red cap, right. अभी तो सब पहनाते हैं ना, कैट रखते हैं ये सब, right. तो cat has red cap.
ये हमारा नॉर्मल डीएनए के सीक्वेंस के जैसे मान लो, राइट? ये इसमें ATCG है इन दैट. नाउ फ्रेम शिफ्ट, राइट? सिंपल मीनिंग फ्रेम जो है, राइट सेंटेंस वो क्या हो रहा है? शिफ्ट. अब इस शिफ्ट कैसे होगा? आइदर एनी लेटर एड और एनी लेटर डिलीटेड. यस और नो? सपोज कंसीडर नाउ दैट कैट, उसमें से मैं H निकाल देती हूँ. विच वन? H gets removed. So now ASR, हर एक लेटर की पोजीशंस क्या हो जाएंगी? शिफ्ट. नेक्स्ट है EDCAP. सेकेंड स्टेटमेंट मुझे ये रीड करके दिखाओ. रीड दैट. रुद्रा. नॉट पॉसिबल. सो डीएनए में भी सेम है. When single nucleotide, right, single nucleotide replicate नहीं हो रहा है, gets deleted, right? पहले तो पूरा जीन क्रोमोसोम पे हमने क्या डिलीशन वहां पे भी आया, बट क्या था वहां पे? पूरा जीन, ये पूरा जीन है वही रेप्लिकेट नहीं होता था. यहाँ पे अभी सिर्फ क्या रेप्लिकेट नहीं हो रहा है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड. When single nucleotide gets deleted, frame total is shift. Yes or no? And it's a meaningful or meaningless? तो बॉडी में भी सेम वही है. सेल के न्यूक्लियस डीएनए में वंस सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स गेट डिलीटेड, पूरा फर्दर सीक्वेंस क्या हो जाता है? डिस्टर्ब. एंड प्रॉपर जो हमें फिनोटाइप मिलना चाहिए दैट वी विल नॉट गेट. क्लियर? तो ये किसकी वजह से हुआ? इंसर्शन या डिलीशन? डिलीशन. नाउ नेक्स्ट, ओके, दिस वन फॉर विच वन? डिलीशन. Next, that is insertion. And now we insert one more letter, right? So in that, cat has read that. हाँ, स्पेल नहीं, वर्ड बोलना है, लाइक लेटर्स नहीं. लास्ट का पूरा मीनिंगलेस हो गया. यस और नो? राइट? एंटायर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट फिनोटाइप. So any time, it's not compulsory to always in the center. It can be occur at the terminal position also, right? So now cat has read, but here no meaning, right? So this thing we call which one? Insertion mutation. Now इसकी वजह से यहाँ का भी जो फ्रेम है that can be shift. अभी ये फ्रेम जो शिफ्ट हो रहा है that is forward or backward, that we have to find. So first CAT, right? तो CAT in that C carry first number, सेकेंड नंबर पे क्या है? थर्ड, फोर्थ पे. चलिए इतना क्लियर. नाउ कैट सेम ऑक्यूपाई 1 2 3 नंबर. नेक्स्ट क्या होगा? एलिफ फोर्थ नंबर पे क्या था? बट नाउ विच वन? ए. फ्रेम शिफ्ट क्या हो रहा है? जो ए फर्स्ट कौन सा पोजीशन पे था? फिफ्थ. बट नाउ इट ऑक्यूपाइज, तो फ्रेम शिफ्ट फॉरवर्ड. फ्रेम शिफ्ट व्हाट? फॉरवर्ड. राइट? नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंड, ये कैट फिर हैज 4 5 6 रेड 7 8 9, बट नाउ सी का कौन सा पोजीशन था? बट नाउ इट ऑक्यूपाइज, बिकॉज 10 पे क्या हो गया? बी. 10 पे कौन सा लेटर आया? बी. isn't it? So C का नंबर क्या हो गया? 11. So due to the insertion, right? Due to the insertion, frame shift gets backward, right? Due to the insertion क्या हो रहा है? यहाँ पे न्यू लेटर इंसर्ट किया, तो जो 10th पे था वो अभी कौन से पोजीशन पे चला गया? 11. तो फ्रेम शिफ्ट बैकवर्ड, right? Frame shift which one? Backward. So mutations are of so many different types. First we have learned chromosomal. Second we have learned which one? Point mutation. Gene में भी सिर्फ point mutation, only one base pair get change leads to disease, right? Third, that is the which one? Frame shift. Frame shift mutation that occurs either addition or insertion, or which one? Deletion of the nucleotides, right? इंसर्शन अगर है तो फ्रेम शिफ्ट, एंड डिलीशन है तो फॉरवर्ड. बोलिए, यहां तक पहले समझ में आया? यस और नो?
क्लियर? फ्रेंड शिफ्ट ओवर हियर गिवन द कैट एट द रेट, है ना? नेक्स्ट वन, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है, इंसर्ट कौन सा? सी क्या हो गया? तो ये आप रीड कर सकते हो? नहीं, मीनिंगलेस, राइट? चलिए, so now next that is the mutagens, right? You know cancer causing agents we call, very good, carcinogen. Cancer causing agents we call carcinogen. वैसे ही mutation causing agents we call mutagens, right? So mutagens, agents that cause mutations we call mutagens. It can be the physical, it can be the which one? Chemical. Physical में first है UV radiations, right? UV radiations coming from sun that cause mainly UV radiation से हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स एक्सपोज होते हैं? स्किन एंड आईज. स्किन एंड विच वन? आईज, राइट? सो स्किन कैंसर जनरली occurs due to this thing. Even which one? X-rays. ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको बोला था, if you can recall, right, that pregnant ladies are not allowed in the which one? X-rays, because that X-rays also leads to what? Mutation. Because during that time in fetus new cells are forming, right? Cells are forming meaning DNA duplicate हो रहा है, और वही रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर एक्सरेज का एक्सपोजर हुआ तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन. दैट विल लीड्स टू व्हाट? म्यूटेशन, राइट? नेक्स्ट थर्ड इज अ विच वन? गामा रेज. केमिकल में है वन ऑफ देम नाइट्रस एसिड, मस्टर्ड गैस एंड दी बेस एनालॉग्स. बेस एनालॉग्स बेसिकली यू नो नाइट्रोजन बेसिस पता है आपको? कौन से? एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, राइट? सो उसी के ही जैसे सेम स्ट्रक्चर्स, राइट? बेस एनालॉग्स. एनालॉग मीनिंग व्हाट? सिमिलर, राइट? बेस, विच बेस? एसिड बेस नहीं, विच वन? नाइट्रोजन बेस. विच वन? नाइट्रोजन बेसिस के एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के जैसे ही स्ट्रक्चर्स, राइट? दैट आल्सो कैन लीड्स टू विच वन? म्यूटेशन. सो कंसीडर एज अ म्यूटाजन, राइट? Like that, so many other things are there which acts as a mutagen. Remember this only first. Physical में कौन से है? X-rays, UV radiation and gamma. Chemical में कौन से है? Nitrous acid, mustard and base analogs. Right? Next one. Now we are going to start the main one, that is disorders. First, Mendelian disorders. Why the name given Mendelian disorder? Because Mendel suggested us what? Either one allele is dominant or recessive in heterozygous condition, right? तो वही concept के base पे certain disorders also diagnosed. So that name that categorized under the which one? Mendelian disorders. These are the genetic disorders caused by a mutation in a single gene. Mutation in a यहाँ पे पेयर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सिंगल जीन. They follow the Mendelian patterns of inheritance and can be studied using pedigree analysis. Pedigree topic I will teach you at the end once we complete all the disorders, right? Characteristic of Mendelian disorder, first of all, caused by mutation in one single gene, inherited according to Mendel's law, right? According to Mendel's law, understand that's a simple law of dominance, right? One is dominant, other is a recessive. Either dominant or recessive. It can be autosomal or sex-linked. Meaning, autosomal or sex-linked meaning what? कि जो mutated allele है, that can be present on 1 to 22 pairs, any of them, or else present on 23rd pair. तो 23rd पैर पे होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक. 1 to 22 पैर्स पे अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल, राइट? ये वर्ड से अवेयर रहना ही, सभी में यही वर्ड्स आएंगे. ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक है, लाइक दिस. सो ऑटोसोमल मीनिंग कौन से पैर्स? 1 to 22 में से कोई भी पैर में है, राइट? एंड सेक्स लिंक है मीनिंग 23rd पैर. Their inheritance pattern can be traced through pedigree analysis, right? Main first,
common Mendelian disorders that we are going to learn. First, that is the which one? Hemophilia. Which one? Hemophilia. Second name है color blindness. Which one? Third name? Fourth? You know phenylketonuria? Yes. Next है thalassemia. Which one? Thalassemia. And the last is a cystic fibrosis. Right? जिसमें से these two, color blindness and the hemophilia, which two? Their genes are located on which chromosome? 23rd. 23rd may be which one? X chromosome. Right? 23rd may be which one? X chromosome. So hemophilia and the color blindness, these are the X-linked disease. Which one? X-linked disease. And बाकी के जो है 4, sickle cell, phenylketonuria, thalassemia, cystic, their genes, right, disease causing genes are located on which chromosomes? Autosomes. वो 1 to 22 में है. Clear? Now, first one by one disease. First disease, that is the color blindness. Right? पहले आपको कितना पता है color blindness के बारे में वो बताओ. What you have heard about that? One at a time. Receptor. Okay. Next. Dominant in. Okay. Next. Color blindness. नहीं पता है मीनिंग नहीं पूछ रहे. Okay. Color blindness, in that first line we have learned that genes are located on which chromosome? X chromosome, right? So females have XX chromosome and the males have XY chromosome. So their genes are located on X chromosomes, pehle to, right? Now, next, color blindness, for that, actually 11th में earlier the structure of eye in detail was given, but आपके time पे वो deleted portion में था. So in that, our retina part, which one? Retina part. Retina part over there, एक होते हैं rod cells and other is a cone cells, right? Do you know about rod cells? That gives us what kind of image? Black and white, right? जब light dim है, meaning night के time पे कौन से cells active रहते हैं? Rod cells, right? आप नाइट पूरा डार्कनेस है तो उसमें भी क्या आपको कलरफुल दिखता है सब? नहीं, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, isn't it? नेक्स्ट वन, अदर इज अ which one? कोन सेल्स, राइट? यू नो ड्राइंग में भी होते हैं प्राइमरी कलर्स, कौन से? कौन से? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू. ओके. So now over here, cone cells basically, right? हमारे में जो है रेड, ब्लू एंड द विच वन? ग्रीन. उसके 3 कोन सेल्स होते हैं, इरिथ्रोलेब, साइनोलेब एंड द क्लोरोलेब, उसके नेम है, राइट? सो 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर रेटिना पार्ट, राइट? रेटिना में एक है रोड सेल्स एंड अदर इज अ कोन सेल. रोड सेल्स गिव्स ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, कोन सेल्स गिव कलरफुल इमेज, right? Now, certain persons are there जिसको color blindness होता है, right? Basically, color blindness में भी different types है. It can be with book में जो दिया है, that is which one? Red green color blindness, right? Meaning red color के cone cells and कौन से green color के cone cells में क्या है? Defect. So वो person को आप कितना भी बोलो कि ये red color है, वो उसको grey बोलेगा या other कोई color, right? Can't able to diagnose that color. Clear? Same for the which one? Green color, like that. So red, green color blindness, किसी को सारे all 3 cone cells, rarely ऐसा होता है कि all 3 types of cone cells get damaged, right? Means वो mutated है तो उसको वो color image दिखता ही नहीं. Very rarely this thing, right? So color blindness first here given in your book is the which type? Red, green color blindness. In that cone cells gets affected. Which one? Cone cells. कौन से? जो रेड कलर के हैं एंड ग्रीन कलर के. रेड कौन से? इरिथ्रोलेब बोलते हैं, ग्रीन को बोलते हैं क्लोरोलेब.
ओके, यू नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो, इरिथ्रो, रेड ब्लड के लिए. कलर ब्लाइंडनेस इज अ व्हाट काइंड ऑफ डिसीज? सेक्स लिंक्ड, understand, sex linked recessive disease. Understand in this way, as and when I say कि this color blindness first, so पहला तो क्लिक होना चाहिए कि इट्स ऑटोसोमल और एक्स लिंक. एक्स लिंक. सो जब भी एक्स लिंक डिसीज को, ये सब पेडिग्री के लिए बेस है, जब भी हम एक्स लिंक डिसीज को रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट वी हैव टू राइट फॉर फीमेल लाइक दिस एंड मेल्स लाइक दिस, राइट. नाउ सो सपोज कलर ब्लाइंडनेस, उसके लिए नॉर्मल के लिए हम लेते हैं कैपिटल सी एंड अफेक्टेड रेसेसिव के लिए लेते हैं स्मॉल सी. सो अगर मुझे नॉर्मल फीमेल का कंपोजिशन लिखना है, नॉर्मल फीमेल, तो दिस एक्स क्रोमोसोम कैरीज व्हाट? क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल सी. एक्स क्रोमोसोम कैरी बोथ कैपिटल सी. मुझे नॉर्मल मेल के लिए कंपोजिशन लिखना है कि दिस मेल इज नॉट सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस कैपिटल सी. नेक्स्ट, सेकेंड, मुझे अफेक्टेड फीमेल्स, राइट, अफेक्टेड फीमेल्स के लिए लिखना है कलर ब्लाइंडनेस. सो व्हाट शुड आई राइट फर्स्ट? फर्स्ट व्हाट शुड आई राइट? एक्स, एक्स. नाउ ऑन दिस एक्स क्रोमोसोम, small c, right? So affected female for color blindness we represent in this way. Affected male for color blindness, पहले क्या लिखो? X, Y. And what should I write? Small c. Right? This genotype indicates what? क्या? Normal female for color blind. This genotype indicates what? This genotype indicates what? Affected female for color blindness. And the last one? Affected male for color blindness. इतना समझ में आया? Now next one. You know, हमने ये भी लिखा था कैपिटल टी, स्मॉल टी, और थर्ड क्या लिखा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, राइट? Now you have to understand this, that one word that is carrier. Which one? Carrier. And carrier we use only for females, not for males, when X-linked recessive diseases are there. For that, first consider कि यहाँ पे जो female है, right? Female has this genotype. Possible है female में ये genotype? पहले तो वो बताओ. Yes or no? Female can have this type of genotype. One is capital C, other is small c. Yes or no? कैसे possible है? Yes, one X chromosome comes from father, other X chromosome comes from mother. Right? It depends. मान लो कि father is affected. Father is affected. Father is suffering from color blindness. Mother is normal, unaffected, right? और हमें डॉटर के कंपोजिशंस बनाने, ये सब एमसीक्यूज के लिए मेन है, राइट? डॉटर के कंपोजिशंस बनाने हैं तो XX आना चाहिए डॉटर में, XY पहले तो वो बताओ. तो Y क्रोमोसोम को देखना भी नहीं आता, राइट? सो नाउ व्हेन XX, तो यहां से कौन से गैमेट्स बनेंगे? पहले वन गैमेट कैरी X एंड दोनों में क्या है? कैपिटल C. यहां से कौन से गैमेट्स बनेंगे? स्मॉल c एंड Y. When this capital C fuse with which one? Small c, right? देखो कैरियर बना. Yes or no? Now when this capital C crossed with which one? This. तो अगेन डॉटर कैसी होगी? कैरियर. वन कैरीज कैपिटल C, अदर स्मॉल c. तो इसको हम क्या कंसीडर करें? अफेक्टेड या अनअफेक्टेड? फिनोटिपिकली क्या है? अनअफेक्टेड. बट दिस वन कैरीज अलील फॉर द डिसीज. सिंगल अलील तो है, राइट? Female itself become, this female daughter itself become what? That's a normal. Become normal. Phenotypically वो क्या है? Normal. Because I told you
रेसेसिव कितने भी हो, डोमिनेंट को एक्सप्रेस होना है तो सिंगल डोमिनेंट अलील इज इनफ, राइट? सिंगल डोमिनेंट अलील इज इनफ टू एक्सप्रेस देयर ट्रेट, राइट? सो रेसेसिव की प्रेजेंट हो या ना हो, डोमिनेंट है, दिस वन विल एक्सप्रेस, राइट? एंड वो एक्सप्रेस होगा तो नॉर्मल कौन सेल्स बनेंगे, नॉर्मल कौन सेल्स बनेंगे, तो नॉर्मल कलर विजन, क्लियर? सो नाउ this are we taken as a what over here as a carrier, which one? Carrier. क्यों carrier? Consider कि ये जो daughter है कैपिटल सी स्मॉल सी, नाउ इसका मैरिज जो हो रहा है, दैट पर्सन अगेंस्ट विच वन अफेक्टेड, राइट? हियर द डॉट फीमेल एंड मेल, ओके? सो फीमेल जो है कैरियर है एंड द मेल अफेक्टेड. मेल अगर अफेक्टेड नहीं, पहले अफेक्टेड करते हैं फिर नॉर्मल का भी देखते हैं, राइट? सो मेल अफेक्टेड है एंड व्हेन दिस ओवर हियर फर्दर प्रोजेनीज आर फॉर्म, सो व्हाट काइंड ऑफ द चांसेस आर देयर? तो ये कैपिटल सी एंड ये स्मॉल सी कंबाइन होंगे तो डॉटर कैसी बनेगी इनकी? नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर, कैपिटल सी स्मॉल सी हेट्रोजाइगस कंडीशन आया, कैरियर. When this capital C and Y combine, then सन कैसे होंगे इनके? कैपिटल सी है, नॉर्मल सन. When this small c and small c combine, then affected daughter, affected daughter. And sorry, when this small c and Y affected son. पहले ये समझ में आया? Yes or no? One more time. Here first I am taking affected male or father. Affected male or consider father. Cross with carrier mother female. यहाँ पे मैं लिखती हूँ father. Right? Now, Anvi, tell me what should I write over here? X and small c. Okay. And here Y. This is the genotype for this father, right? Blossom, tell me. Small c. This is for carrier. Sneh, what kind of gametes are formed? Okay. Next, Sakina, tell me here what kind of gametes are formed? हाँ, कौन से? कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट? ये जो अभी क्रिस क्रॉस पैटर्न किया था, अगर आपको उस पे गड़बड़ी होती है ना, सो डू विच वन? पुनेट स्क्वायर, राइट? वन साइड राइट दिस एक्स स्मॉल सी एंड कैपिटल वाई, अदर एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी. Okay, now in this case, चलिए दिया दिखाई दे रहा है, शिफ्ट हो जाओ अदरवाइज. कैपिटल हियर द which one? Prisha Shah. Capital C, small c. When these two combine mantra, X capital C Y, right? Next, Pushti Dave, third. X small c and X small c. Okay. Next, Palak, X small c. Y, right? Now, next one, Krisha Patel. What is the phenotype for this female? X capital. Phenotype, genotype लिख दिया, phenotype. Normal but carrier female. समझ में आ रहा है? Very good. Normal but carrier. ये normal है but carrier for the next generation. Carrier for the ये parents है, parents के daughter, son, daughter, son. ये daughter का जब further marriage होगा, right? So it can carry this allele to the further generation. समझ में आ रहा है? Right? कैसे? फिर हम इसका आगे करेंगे, right? Now next, तो ये बना this female becomes what? Carrier but phenotypically normal.
Kavya, this one. Normal way. Normal male, non-affected male. Jairaj. Affected. Affected. हाँ affected है. Color vision affected. Female male क्या है? Daughter son. Female daughters, right? Affected females we consider daughter. Affected females, but these are what? Daughter over here. Next one, Anshi. Affected male. Clear? Sure? Now, next. So, we consider that कि ये जो है females, this female as a what? Carrier, right? Carrier in which sense? So X capital C small c. Consider that इनका जो marriage हो रहा है, that's with the affected male, right? Which one? Affected male. One condition is this, and second condition carrier है, and the marriage occurs with unaffected male, right? Two conditions we have to learn. One with the which one? Affected. Other with the which one? Unaffected. Right? Pause. Solve. Right? Color blindness is more common in the males compared to the females. Because females have how many X chromosome? 2 X chromosome. Males have only 1 X chromosome. So in that case, females may suppose one of the allele that cause disease. But females have another X chromosome, and if it carries dominant, then disease will express? No. But males have only? So either small c आ सकता है और capital C. जैसे ही small c आया single, that shows this is yes or no. So that's why this thing more common in males compared to females, because females carry how many X chromosomes? 2 X chromosomes. Clear? So 8% है males में, 0.4% है females में. Clear? Color blindness is more common in males due to the carry only 1 X chromosome, rarely occur in females due to the possessing of 2 X chromosomes. In case of male, percentage कितना है? 8 और 4. And females में 0.4, 0.8 मत कर देना, 0.4%, right? Now, you will have to perform this all crosses right now. Pause. He mentioned that a daughter will normally be colorblind unless her mother is a carrier and her father is colorblind. अगर दोनों colorblind है, right? तो 100% chances है, but generally that daughter will not normally be colorblind in this case, right? Even दोनों normal है तो भी normal, but here this condition also you should apply that carrier which one? Mother is a carrier and father is colorblind. Next one, चलिए first color blindness disease में कोई doubt? कौन से points में learn करना है? Color blindness, that is what kind of disease? X-linked, X-linked recessive disease. Which one? X-linked recessive disease. 11. X-linked recessive disease, right? So X-linked recessive disease, in that, remember that is the one of the example is color blindness, right? So recessive alleles are responsible for disease, not the dominant alleles, right? जहाँ पे capital C आया था, तो क्या वो that cause the disease? No. So recessive alleles are responsible for disease, not the dominant alleles. Second point, remember that in that cone cells of the retina gets affected. Third point, remember that is very common in males compared to females. Percentage. Yes. And then different crosses you have to then, right? Affected female with that affected male, carrier female, and affected male, like this. Understood? Next one, hemophilia. Which disease? Hemophilia. Again, it's a what kind of disease? Sex-linked, X-linked, recessive genetic disorder. Hemophilia के बारे में पहले क्या सुना है आपने?
Nothing? Okay. Hemophilia, in that blood clotting process delayed. Blood clotting process what? Delayed. Right? Meaning what? कि suppose यहाँ पे कट लगा है, नॉर्मल पर्सन है तो विद इन फ्यू मिनट्स वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, बट हीमोफिलिक पर्सन जो होते हैं उनको बहुत ही संभाल के रख, बिकॉज कहीं पे भी स्मॉल कट द ब्लड कम्स आउट लाइक विथ अ फोर्स, मैक्सिमम ब्लड दैट कम्स आउट because blood clotting factors are not working in that person, right? So first, you know, blood clotting you have learned in 11th standard, right? Fibrinogen, then thrombin, thromboplastin, calcium, these are the factors. Like that, total actually 13 factors hote हैं that active as the that's the thrombocytes. Thrombocytes another name, platelets. So one of the factor name that is AHG. Which one? AHG, anti-hemophilic globulin. क्या है name? Repeat. And in that topic, clotting of blood, one word is given, cascade reaction. याद है? What is the meaning of that? Series of reactions, cascade reactions, right? One reaction occur, then one product form the second, second to third, like that 13 factors get activated. One of the factor is this one. If this factor, मान लो कि 7th number पे ये factor है, and this factor will not be able to get activated, so further reactions will stop. That thrombocytes now will not help in the blood clotting. Clear? So which factors, right, that deficiency cause this thing, that is AHG, anti-hemophilic globulin. इसके जीन से नहीं होते तो ये फैक्टर फॉर्म नहीं होता, and without that factor blood clotting will not be possible, right? So first, it's that genes are located on which chromosome? X chromosomes. Dominant disease है या recessive? Meaning recessive cause disease or recessive gives normal? Recessive cause disease. Now, defective gene present on the X chromosome. In hemophilia, one of the protein, which protein? Anti-hemophilic globulin, right? So one of the proteins required for blood clotting is absent or defective. Therefore, even a small cut or injury can lead to continuous bleeding because the blood does not clot properly. Next, उसको immediately hospitalize करना पड़ता है. Next one, inheritance pattern. So inheritance pattern, in that again the same. अगर hemophilic, here we use the which word? Hemophilic female, hemophilic male, non-hemophilic male, non-hemophilic female. If I written in a this way, capital H, capital H, तो ये female कैसी है? Unaffected, normal, female. Next one, if this genotype is there, then capital H, small h लिखा है. Then normal but carrier for hemophilia. If this genotype for the female, then affected female. Next one, for males, if written like this, then unaffected, and this one affected male. पहले genotypes clear है. Now the things like similar with that color blindness, right? Will you solve by yourself? Solve for this thing, that marriage between hemophilic female, normal male. Stop, Kavya. Hemophilic female, so composition क्या होगा? X hemophilic है, small h, right? Next, normal male X and Y, right? Now over here, capital H, small h. Here,
इतना आया सबका पहले रेशियो, राइट? नाउ नेक्स्ट टेल मी फॉर दैट percentage for that female child or the daughters can become hemophilic. 0%. daughters के लिए ही पूछा है. Okay. Next one, daughters that genotypically normal. phenotypically normal. phenotypically क्या है? normal. 100%, right? Next, male child, right, or the son that became hemophilic. दोनों में है 100%, राइट? सन पूछा तो सिर्फ सन के लिए ही काउंट करना है. अगर आप पूरा काउंट करते तो कितने हो जाता? 50. बट बोथ द सन्स गेट अफेक्टेड, सो 100% चांसेस आर दैट द सन विल गेट्स अफेक्टेड hemophilic. Fully clear? Sure? Now next, transition, a carrier female can pass the defective gene for that her children. 50% sons may become hemophilic, 50% daughter become hemophilic. Next, carrier. Why is hemophilia are rare in females? कलर ब्लाइंडनेस के लिए किया, बिकॉज सेम हीमोफीलिया में भी क्या है? एक्स लिंक. फीमेल्स हैव 2x क्रोमोसोम, मेल्स हैव ओनली 1x क्रोमोसोम. One of the example is given, right? Hemophilia disease is known as a royal disease. Which one? Royal, right? Royal word आए तो क्या माइंड में क्लिक होता है? British, Queen, King, isn't it, right? So female Queen Victoria, you know, कहाँ पे? Queen Victoria was a carrier, remember, was a carrier of hemophilia and carrier है, so she can pass that defective gene allele to the further offsprings, right? So in there, that's the lineage, right? So many descendants are there. They are suffering from the which one? Hemophilia. She passed the defective gene to several of her descendants, and therefore hemophilia is sometimes called a which disease? Royal disease. क्लियर? क्वीन विक्टोरिया के रेफरेंस में अगर पूछे तो कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया? हीमोफीलिया, राइट? क्वीन विक्टोरिया क्या है? अफेक्टेड या कैरियर? रिमेंबर दिस लाइन ऑल्सो, राइट? क्वीन विक्टोरिया वॉज अ कैरियर फॉर hemophilia. That's why so many her descendants, that shows that this is only clear. This thing already we have done. Okay, pause.